Roald Amundsen was born in Norway in 1872. रोल्ड आमंडसन नॉर्वे में 1872 में पैदा हुए। As a child, he read about famous British explorers. बचपन में इसने मशहूर बरतानवी मुतलाशियों के बारे में पढ़ा। He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open, despite the freezing cold Norwegian winters. उसने ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की टीमों में शमूलियत इख्तियार की और नॉर्वेजियन सर्दियों के मुंजमद होने के बावजूद अपनी खिड़कियां खिली रखकर सोए, so that he would be fit, strong, and ready if he got the chance to be an explorer. ताकि अगर इसे एक्सप्लोरर बनने का मौका मिले तो वो तंदुरुस्त, मजबूत और तैयार रहे। Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor. एमनेडसन का खानदान जहाज रानी की सनत में काम करता था, लेकिन उसकी वालिदा चाहती थी कि वो समंदर में जिंदगी के खतरात से बचीं। इसलिए इसने उसे डॉक्टर बनने की तरगीब दी। He obeyed his mother's wishes, while continuing to read about explorers. उसने अपनी माँ की ख्वाहिशात की तामील की, जबकि मुतलाशियों के बारे में पढ़ना जारी रखा। When he was 21 years old, his mother died. जब वो 21 साल का था तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। Amundsen left university and began his life as an explorer. एमनेडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक एक्सप्लोरर के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया। Some of Amundsen's achievements. एमनेडसन की कुछ कामयाबियां। He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. वो आर्कटिक समंदर में शुमाल मगरबी गुजरगाह से गुजरने वाला पहला शख्स था। He was in the first expedition to reach the South Pole on December 14, 1911. वो 14 दिसंबर 1911 को कुतुब जुनूबी तक पहुंचने की पहली मुहिम में थे। In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. 1926 में उसने कुतुब शुमाली तक एक कामयाब मुहिम की क़यादत की। He is recognized as the first person to have reached both poles. इसे दोनों कतबूहे तक पहुंचने वाले पहले शख्स के तौर पर पहचाना जाता है। In early expeditions, Amundsen was part of the crew. इब्तिदाई मुहिम्मात में एमनेडसन अमले का हिस्सा था। He watched, listened, and learned some useful skills. उसने देखा, सुना और कुछ मुफीद हुनर सीखे। Once, on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. एक बार बर्फ में फंसे हुए जहाज पर उसने देखा कि किस तरह डॉक्टर की शिकार की महारत ने अमले को ताज़ा गोश्त फराहम किया और उन्हें स्कर्वी से पाक रखा। Scurvy is a disease caused by a lack of vitamin C. It can lead to illness, the loss of teeth, and death from bleeding. स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ये बीमारी दांतों का नुकसान और खून बहने से मौत का बाइस बन सकता है। When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, Jua. जब वो 28 साल का था, एमनेडसन अपने ही जहाज गजवा के साथ मुहिम्मात का रहनुमा बन गया। The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. ये जहाज अभी भी ओस्लो के फ्रेम म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Gijoa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 से 1906 तक एमनेडसन ने शुमाल मगरबी गुजरगाह से गुजरने का रास्ता तलाश करने के लिए एक मुहिम पर गजवा पर 6 आदमियों के अमले को साथ लिया। The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. नॉर्थ वेस्ट पैसेज बहर ओकियानूस से बहर अलकाहिल तक आर्कटिक समंदर से गुजरने वाले समंदरी रास्ते का नाम है। Due to the very cold temperatures, the area is frozen over most of the time. इंतहाई सर्द दर्जा हरारत की वजह से
ये इलाका ज़्यादातर मुंजमद रहता है। For a short while each year, the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. हर साल थोड़ी देर के लिए कनाडा के शुमाल में ज़मीन के गिर्द बर्फ इतनी टूट जाती है कि जहाज़ों को गुजरने देता है। Giowa was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. गजवा इतना छोटा था कि उन पानियों और उथले इलाकों के ऊपर से गुजर सकता था जिससे बड़े जहाज तबाह हो जाते थे। During the winters, when the ship was frozen into ice, सर्दियों के दौरान जब जहाज बर्फ में जिम जाता था, the crew watched the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills. तो अमले ने वहां रहने वाले इनुट को देखा और आर्कटिक की बका की अहम महारतें हासिल कीं, Such as using dogs to travel by sledge. जैसे कुत्तों को सलेज के जरिए सफर करने के लिए इस्तेमाल करना। These were useful on later expeditions to the North Pole. Amundsen also stocked up on furs to wear, which were much warmer than the woolen clothes he had. ये बाद में कुतुब शुमाली की मुहिम्मात में कारआमद थे। एमनेडसन ने पहनने के लिए खालों का ज़ख़ीरा भी किया जो उसके पास मौजूद ऊनी कपड़ों से कहीं ज़्यादा गर्म थे। Getting to the North Pole was a challenge. कुतुब शुमाली तक पहुंचना एक चैलेंज था। First, Amundsen tried to go by ship, but it got stuck in ice. पहले एमनेडसन ने जहाज से जाने की कोशिश की लेकिन वो बर्फ में फंस गया। He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. इसे अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता सोचना पड़ा और हवाई जहाज में सफ़र करने का फैसला किया। The first attempt, in 1925, was dangerous and unsuccessful. पहली कोशिश 1925 में खतरनाक और नाकाम रही। Finally, in 1926, Amundsen made it to the North Pole. आखिरकार 1926 में एमनेडसन ने कुतुब शुमाली तक रसाई हासिल की। 3 other people claimed, separately, to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. 3 दीगर लोगों ने अलग अलग दावा किया कि वो एमनेडसन से पहले कुतुब शुमाली तक पहुंच गए थे, लेकिन ये सब मुतनाज़ा रहे। Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. एमनेडसन की महारत और इस्तिकामत ने इसे पहला शख्स बना दिया जो ये दावा करने के काबिल हुआ कि वो दोनों कतबोहे पर रहा है। He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबियां मुनासिब तैयारी और मुनासिब आलात रखने से हासिल हुई हैं। He said, "Victory awaits him who has everything in order." उसने कहा, फतह इसकी मुंतज़र है जिसके पास सब कुछ तरतीब से है। Amundsen wrote about his experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. एमनेडसन ने अपनी सवाने उम्री माई लाइफ बतौर एक्सप्लोरर में अपने तजुर्बात के बारे में लिखा। One day, 2 of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is a caribou." एक दिन मैं और 2 लड़के डेक पर खड़े थे जब इनमें से एक ने कहा, एक कैरिबो है। He pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hills. उसने घेरे हुए पहाड़ियों में से एक के स्काईलाइन पर एक छोटी सी सियाह चीज की तरफ इशारा किया। The other man, who had the best vision of the 3, दूसरे आदमी ने, जिसकी नजर उन तीनों में सबसे अच्छी थी, looked steadfastly at the black object for a moment, and then turned to his companion and said, "That caribou walks on 2 legs." एक लम्हे के लिए इस काली चीज को देखता रहा और फिर अपने साथी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, वो कैरिबो 2 टांगों पर चलता है। Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou, but an Eskimo. यकीनी तौर पर
करीब से जांच पड़ताल ने इसके फौरी तासुर की तस्दीक की कि ये कैरिबो नहीं बल्कि एक एस्केमो था। Some other two-legged caribous joined the first, until 5 figures were outlined against the sky. कुछ दूसरे 2 टांगों वाले कैरिबोस पहले में शामिल हुए, यहाँ तक कि आसमान के खिलाफ 5 अदाद शुमार का खाका पेश किया गया। Then they advanced toward us in a body. I sent the 2 boys for their rifles, and then the 3 of us advanced to meet them. फिर वो एक जिस्म में हमारी तरफ बढ़े। मैंने दोनों लड़कों को उनकी राइफलें लेकर भेजा और फिर हम तीनों ने उनसे मिलने के लिए पेशकदमी की। I was in the lead and behind me came my little army of 2. मैं आगे था और मेरे पीछे मेरी 2 की छोटी फौज आई। As the Eskimos neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. जैसे ही एस्किमोस हमारे करीब आए, हम देख सकते थे कि वो सब कमानों और तीरों से लैस थे। This began to look like a ticklish situation. ये सूरत हाल एक गुदगुदी की तरह नजर आने लगी। We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile. हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उनके इरादे दोस्ताना थे या दुश्मन। Certainly, they were equipped for war. However, there was nothing to do but meet them face to face. यकीनन वो जंग के लिए लैस थे, ताहम उनसे आमने सामने मिलने के सिवा कुछ नहीं था। The 2 parties proceeded to within about 15 paces and then halted. दोनों पार्टियां तकरीबन 15 रफ्तार के अंदर आगे बढ़ीं और फिर रुक गईं। I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. इसके बाद मैं अपनी फौज की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें अपनी राइफलें जमीन पर फेंकने की हिदायत दी। I then turned to the Eskimos. मैं फिर एस्किमोस की तरफ मुतवज्जे हुआ। Their leader, seeing this pacific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. उनके लीडर ने इस बहरुल-काहिल हरकत को देखकर अपने पैरोकारों की तरफ मुतवज्जे होकर और हुक्म सुनाया। They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. उन्होंने अपनी कमान और तीर जमीन पर फेंककर इताअत की। I was unarmed and advanced toward them. मैं गैर मुसल्लह था और उनकी तरफ बढ़ा। The Eskimo leader also came out alone. एस्किमो लीडर भी अकेला ही बाहर निकल आया। It is remarkable how accurately 2 men can communicate who do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each other's. ये बात काबिल जिक्र है कि 2 आदमी कितने दुरुस्त तरीके से बातचीत कर सकते हैं जो आम ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते और जिनकी जिंदगी का पूरा तजुर्बा एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आता है। Expressions of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. हकीकत का इजहार, सर हिलाना और हिलाना, आवाज के इशारों और लहजे हैरत अंगेज दुरुस्तगी के साथ मानी बयान करते हैं। By these means, I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend, and he reciprocated my wish. इन जराए से मैंने जल्दी से एस्किमो लीडर को कायल किया कि मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूं और उसने मेरी ख्वाहिश का बदला लिया। Soon we were all friendly and I invited them down to our ship. जल्द ही हम सब दोस्ताना हो गए और मैंने उन्हें अपने जहाज पर आने की दावत दी। In June 1928, aged 55 Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. जून 1928 में 55 साल की उम्र में एमनडसन एक रेस्क्यू मिशन पर जहाज में सफर कर रहा था जब वो लापता हो गया। Amundsen and the rest of the crew were never seen again. एमनडसन और बाकी अमला दोबारा कभी नहीं देखा गया। The North Pole. No land mass, mainly ice and snow. Polar bears, seals,
Walruses are native to North Pole. In the middle of the Arctic Ocean, which is a mass of shifting sea ice, the ice cap is shrinking due to climate change. No sunlight from September to March. The sun rises in March and sets in September. Seals have been spotted at the North Pole, and polar bears and Arctic foxes are sometimes seen nearby, warmer than the South Pole, but still very cold. Alert! In the Qikiqtaaluk region, Nunavut, Canada, is the nearest inhabited land. It is 817 kilometers away. The South Pole. On the continent of Antarctica, 1,300 kilometers from the sea, the land is covered in ice and snow 2,700 meters thick. No sunlight from March to September. The sun stays on the horizon from September to March, colder than the North Pole. Scientists live all year round in the Amundsen Scott Ice Station. Lichens and moss can be found in some parts during summer. Exercises. Comprehension. Answer the following questions. What did Amundsen's mother want him to be? Did he follow her wishes? Amundsen's mother wanted him to be a doctor. He followed her wishes until she died. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this as a child and as an adult? Amundsen was inspired by famous British explorers. As a child, he prepared for life as an explorer by playing a lot of sports, sleeping with his windows open, and reading about explorers. As an adult, he worked as a ship's crew member where he watched, listened, and learned useful skills on board and from the Inuit people, such as how to prevent scurvy, how to keep warm, and how to use dogs to travel by sledge. What key skills did Amundsen learn about survival? Amundsen learned some useful survival skills. He was also very determined and well prepared. He made sure he knew how to survive before setting off on his own expeditions. What made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen achieve it? Very cold temperatures, shallow seas, and sea ice made it difficult to pass through the Northwest Passage. Amundsen's boat, Gioa, helped him pass through it because it was small enough to pass through these waters and over the shallow areas. When did Amundsen get to the North Pole? Amundsen get to the North Pole in 1926. What did Amundsen's companions mistake the Eskimos for? Why? Amundsen's companions mistook the Inuit for caribou because they were so far away. How did Amundsen talk to the Eskimos? Amundsen talked to the Eskimos by using a mixture of simple expression, body language, and tone of voice. Expression of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice. How did Amundsen die? Amundsen disappeared on a rescue mission, so we cannot be sure of how he died.